देखो मिक्सचर एलिगेशन दीटा पार्ट एक्चुअली एलिगेशन इज समथिंग डिफरेंट फास्ट हमें जनरली एक्चुअली हमें मिक्सचर क्वेश्चन माने सॉल्व करबा तापर हमें एक्चुअली एलिगेशन भी पढ़िबा एलिगेशन इज a method only to solve different types of questions, not only the questions those are related to mixture but also there are so many questions where the concept of average comes the allegation automatically it can be applicable there जो जगह रे भी तुम देखिलो जे एवरेज रो कांसेप्ट आसिला सेही जगह रे एलिगेशन पढिबो ही पढिबो एंड धीरे धीरे हम डिस्कशन करिवा फर्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ द मिक्सचर देन यू शैल गो फॉर दैट एलिगेशन एंड मिक्सचर पढिया पूर्वरु खाली गोटे छोटो जिनस रे मु डिस्कशन करिया पे चाहूची जोटा कि हम रेशियो रे एक्चुअली पढी थिले दीटा नंबर सम जदी म्यूट करो समस्या प्लीज A and B are two numbers whose sum is 80 but their ratio is 2:3 जदी मते A जो वैल्यू पचरा गला then I can directly write 80 into 2/5 ये हमें लिखु थिले मन अछि समस्तंकर and this was 32 मते एबे तमे निजे कह जदी एठी A plus B न देइकरी जदी एठी बोला जदी मते एक्चुअली A plus B जदी न देइकी ए जगह रे जदी मते मिल्क प्लस वाटर जदी दियंदा then also I can find out the answer A plus B न देइकी गोटे जार रे मिल्क आ वाटर सपोज 80 लीटर अछि एंड मते सपोज वाटर पचारला किबा मिल्क पचारला ताले डायरेक्टली हम इजिली कहि परिबा what will be the amount of milk 80 into 2/3 this is 32 liter sorry eta water eta sorry just a minute nehla wait just a minute please शाश्वता दीदी सार कटि गेले कि ना सार नाहंती रेकॉर्डिंग टा ऑफ कर दिया हाँ ओके जदी मते मिल्क प्लस वाटर देखो ए जगह रे मते इजिली A plus B 80 दोथला एंड जदी A plus B न दे कि जदी मते मिल्क प्लस वाटर जदी दे दि 80 लीटर एंड मते दो वाटर जदी बाहर करिया पे कहा जे then the same thing is here that 2:3
2:3 ରୁ ମୁଁ ताने B बाहर करूची, that means I am finding out the water. So what will be the ratio? That will be 3 माने milk is to water is 2:3. तो मतलब water जदि बाहर करे आप कहा जे, then definitely I can say that will be 3/5. जदि milk मते कहा गला, then what we can do? We can do 2/5. This is equal to, this is 48 liter, this is 32 liter. So ratio रे हमें जोटा पढ़ी थिले सेठी ए बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजी वे देयर, जेमति कॉइन्स रो क्वेश्चन हला कि हमें ए बी बी सी रो मर्जिंग ऑफ रेशियो कांसेप्ट पढ़िले, कांसेप्ट से गोटे जस्ट ताकू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरी तामने एक्चुअली बना जाउची, से कहले भी एक्चुअली चलिबो। तो एई जगह रे हमें मिक्सचर रे भी सेमिति गोटे जगह रे दुईटा नंबर को मिसेले 80 न देगिरी मते क्वेश्चन रे डायरेक्ट एक्चुअली देई दबो जे कोन ना मिल्क आ वाटर मिसी के 80 लीटर। देन व्हाट वी कैन डू, जस्ट सही जगह रे जेमति a plus b रो सम रो हमें a को इंडिविजुअली b को इंडिविजुअली बाहर उतरे एग्जैक्टली एठी हमें तामने सेमिति ही बाहर करिवा। आउट ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर we can find out milk and we can find out the water. That is the thing. But when the questions comes to the find out the ratio of the two constituent when two mixture are mixed, suppose मोटे तमुटे question actually पचारेबी बहुत सिंपल जिनस, दीटा मिक्सचर अच्छी, दिस इज मिक्सचर 1 एंड मिक्सचर 2। ए मिक्सचर 1 रे मिल्क और वाटर रेशियो 3:2 अच्छी एंड मिक्सचर 2 रे इट इज 4:5 अच्छी। क्वेश्चन कहबो दीटा जाको मिक्सचर को मिसै देकरी मु आ गोटे मिक्सचर 3 बाहर करबी, एथरे मिल्क और वाटर रेशियो केते हबो। I don't know what will be the quantity that I will mix from mixture 1 and what will be the quantity that will be mixed from mixture 2, but I know the ratio. Can I get the answer? मु जानी नि mixture 1 रो केते लीटर मिसेबी and mixture 2 रो केते लीटर मिसेबी, आंसर बाहरी पारिबो ना बाहरी बनी कोन पे। अच्छा ए दीटा मिक्सचर रो कोटा बेसी भलो मिक्सचर तुमको यदि कहा जे मिक्सचर 1 रे मिल्क वाटर 3:2 रहछि, मिक्सचर 2 रे 4:5 रहछि, तुमको यदि प्रिफर करो कोटा भलोटा कहा जेबो, देन व्हिच मिक्सचर विल प्रिफर? मिक्सचर 1 डेफिनेटली बिकॉज़ एथिरे मिल्क रो कंसंट्रेशन बेसी अछि एज कंपेयर टू द वाटर। सो हमें जानि नु एक्चुअली को क्वांटिटी रो केते मिसेबा, बट जदि हमें जानि गले मिक्सचर 1 रो 30 लीटर बाहर करो एंड मिक्सचर 2 रो 18 लीटर बाहर करो, 18 दनो अलगा उठी नै जाउची, लेट दैट बी 40 लीटर। एबे बाहर करी हबो फाइनली मिल्क और वाटर रेशियो केते हबो। तो फाइनल मिक्सचर जो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइनल मिक्सचर रे जो मिल्क और वाटर रहबो सेटा को कोठु आसीबो, फर्स्ट मिक्सचर ऑफ मिल्क प्लस सेकंड मिक्सचर ऑफ मिल्क होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट मिक्सचर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सेकंड मिक्सचर ऑफ वाटर। या तो दीटा जाको मिक्सचर जदि मते मिसे की फाइनली मिल्क और वाटर रेशियो जदि बाहर करिया पे कहा जाय, ताले हमें कोन करबा ना देखिबा जे फर्स्ट रु केते मिल्क आसीतला, सेकंड रु केते मिल्क आसीजी एंड फर्स्ट रु केते वाटर आसीजी, सेकंड रु केते वाटर आसीजी। इनडायरेक्टली हमें कोन करूजे जे फाइनल जो मिक्सचर जो बाहर होची, जो मिक्सचर जो 3 बाहर होची, मिक्सचर 3 रे मिल्क और वाटर केते लेखन अछि हमें तामने बाहर करि दबा, ताहले हमें ताको रेशियो बाहर करि परिबा। यस और नो? यस सर। ताहले एबे मते कुह फर्स्ट मिक्सचर रो मु केते लीटर नोजी 30 लीटर, मिल्क आ वाटर रेशियो 3:2 अछि। थबीर कहला एथरे मिल्क केते थिबो, थबीर कोन लिखि पारेबी मिल्क में, या लिखि पारेबी 3:3/5। यस मोर टारगेट ही से मूलरू कहूची जस्ट वी लर्न दिस मेथड। मे बी एक क्वेश्चन पे हमको इजी है पारे 5 यूनिट को 30 लीटर
1 को 6 लीटर 3 को 18 लीटर बट एमती सब बेले नुह कि ये गोटे 5 रो मल्टीपल दे दे मते 13 लीटर देबो ताले मु कोन करिवि देन आई हैव टू अप्लाई दिस मेथड एंड मु सिंपलीफिकेशन पढेला बेले तुमको बतेइबी थिली जे आमे जो जगह रे भी फ्रैक्शंस रो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फेस करिवा ताही डिनोमिनेटर रो रोल एक्चुअली बहुत नेग्लिजिबल समटाइम्स इट देयर इज नो रोल ऑफ द डिनोमिनेटर एट ऑल सेथि पे आमे तुमको सेतेले बतेइथिली क्रॉस मल्टीप्लाई करी आमे देले फ्रैक्शन देले मिसौथिले बिकॉज़ आमे न्यूमरेटर को आमे एक्चुअली बेसी फोकस करूथिले तो गोटे मिक्सचर रे जदी 30 लीटर जदी मिक्सचर जदी अछि हां को सर आउथर टिके कहबी कोटा 30 into 3/5 हां सेटा कहू जे देखो फास्ट मिक्सचर मिल्क वाटर रेशियो केते अछि 3:2 तो 3:2 आज्ञा हमें सेतरु केते लीटर नेले 30 लीटर ताले मिल्क ता एथरे केते तो अछि मिल्क ता 3/5 आज्ञा टोटल 5 भाग रो मिल्क केते भाग अछि 3/5 तो फास्ट रु ताले एतिकी मिल्क जाई जे एबे मते सेकंड रो भी एबे मते मिल्क दरकार सेकंड रो मिल्क केते हेबो 4/9 so here I have to write down 40 into 4/9 ताले मु दीटा अगर मु ताले मिल्क एबे पाई गली होल डिवाइडेड बाय वाटर सेमिति फास्ट थरो वाटर केते जिवो पार्थ 2/5 वेरी गुड एंड सेकंड रो केते जिवो 40 into 4/9 पळै दिला बाकी ताने 5/9 तो एटा ही एक्चुअली कांसेप्ट दिस इज द कांसेप्ट बिकॉज़ हमें एथि पे एटा इलु मने रखु जे एबे माने एई मेथड एथि पे हमें अप्लाई करू जे ना सबु बेले ता माने रेशियो रो सम रो मते मल्टीपल देबोनी एठी सब बेले एमति 30 लीटर देबोनी जेमति कहली 26 लीटर दे दबो 5 यूनिट को 26 एक को डेसिमल आसीबो तळे बे जेमति हिजी 5 4 9 यूनिट को 40 करियाडा मुश्किल बट हमें रेशियो हम इजिली बाहर करि पारिबा जो जगह मल्टीपल दे दोची एठी मनकर 90 लीटर दे थांदा ताले मु 40 लीटर 50 लीटर इजिली बाहर करि पारि थांदी एंड सेई टाइम रे ए मेथड न लिखि की वाटर डायरेक्ट तमे 40 50 लिखि देले चलिबो बट हमें ए मेथड सिखिथि वार अछि then what will be the next step simple हमें मिसे एबे बसिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज 30 into 30 90/5 मु पूरा सिंपल फास्ट लिखि दोची डिटेल बुझिबा हमें पास this is 160/9 whole divided by 60/5 plus 200/9 अच्छा दुही डिनोमिनेटर दुही थेरो डिनोमिनेटर सेम आसीबो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एथि भी एलसीएम 45 आसीबो एथि भी एलसीएम एक्चुअली 45 ही आसीबो दैट मींस ता ऊपर हमको आ फोकस करिवा दरकार ही नहीं हमें एबे सॉल्व केमती करिवा 9 into 90 please try to understand what I am going to do 9 into 90 plus 5 into 160 whole divided by 9 into 60 plus 5 into 200 या करिवा तो हेलो नहीं डिनोमिनेटर केते आसीबो 2 रे 45 45 आसीबो एंड दिस 45 विल बी कैंसल तो बहुत गुटे सिंपल जिंस एक्चुअली एठी कोन ना सबु थरे गोटे गोटे इली जीरो आसुजी जहा को मु एबे काटीबी 0 0 एठू कॉमन ने गले 10 टे कटि जिवो एठू भी 10 टे कॉमन नेले कटि जिवो 9 9 81 plus 80 this is 161 and this is 154 this is 154 एटा हबो एक्चुअली मोर आंसर सो क्वेश्चन मते जे कहिला गोटे मिक्सचर रे मिल्क वाटर रेशियो 3:2 अछि सेथरे मु 30 लीटर मिक्सचर नेबी आउ गोटे मिक्सचर रे मिल्क वाटर रेशियो 4:5 अछि सेथरे मु ताले 40 लीटर मिक्सचर नेली एंड दुटा को मिसे देला पर फाइनली जो मिल्क वाटर बाहरिबो तारो रेशियो केते हेबो सो द आंसर विल बी 161:154 वर्तमान माइंड रे हमर क्वेश्चन आसीबो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन बेले हे जे तो को केस रे हेबो हमें दाबो देखियो
ए जो 0 0 जो आसीला ए 0 कोठु आसीतला हमें ता रूट को एक्चुअली बाहर करिया पे चेष्टा करी 0 कोठु आसीतला एठो ए जो 0 अछि एटा ए 0 ही सेटा हमें लिखि छी ए 0 कोठु आसीतला ए 0 यस ताले ए 0 कहार 0 ए तार 0 ताले हमें फाइनली देखले 30 और 40 रे जो दीटा में जो 0 जो लगी थिला 3 और 4 संगे तार रोल आउ किछि नहीं लास्ट जे कैंसिल आउट ही होची बिकॉज़ रेशियो ही आसुची एंड डेफिनेटली इट विल कम नो कोन पई देखो एई जगह रे 30 40 से 30 40 एठी भी लिखियो ताले एई दुईटा रो जो फैक्टर कॉमन हो एई दुईटा रो सेही फैक्टर कॉमन आसियो फाइनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होची तो कैंसिल आउट ही एंड सिंपल आ गोटे जिंस तो कहि मु गोटे जनरल जदि हम प्रैक्टिकल जिंस भी जदि देखिबा जदि हमें प्रति 2 लिटर क्षीर रे सपोज आउट बेसी नहीं 10 लिटर क्षीर रे 1 लिटर पानी मिसेबी क्षीर जेतकी पानी चिया हबो 30 लिटर क्षीर रे 3 लिटर पानी मिसेले सेतकी पानी चिया हबो कि अलगा कि हबो यस डेफिनेटली तामाने जो कंसंट्रेशन टा जो रेशियो टा तो मते केवल दरकार ये 3 गुण बढ़ी जाउची माने ये डेफिनेटली 3 टाइम्स ताले आमे ताले फाइनली गोटे जिंस ऊपर ही डिपेंड करिवा जे मिक्सचर रो रेशियो ऊपर ही आमे डिपेंड करू जे 10 लिटर 1 लिटर मिसे भी जहा 30 लिटर 3 लिटर मिसे भी ताहा 1 लिटर 100 ml मिसे भी ताने से so the ratio should be 10:1 एठी भी सेया सेति भाई मु 30 लिटर 40 लिटर मिसे भी जहा 3 लिटर 4 लिटर मिसे भी सेया बिकॉज़ जो कंसंट्रेशन बाहरिबो आंसर सेति ही आसीबो ताहले आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हेबोनी जदि मते 30 40 न देगी क्वेश्चन जदि मते 3:4 भी दे दे मते पचारि पारिबो the ratio of milk and water in two mixtures are 3:2 and 4:5 respectively both the mixture are mixed in the ratio 3:4 30 40 devoni so debo kono 3:4 then what will be the ratio of the milk to water in the final mixture then again the answer will be 161:154 चाहे से 30 40 दो कि चाहे से 160 सॉरी 3:4 दो the answer will be 161/154 so I think everybody is clear up till clear etik समस्त कर okay yes sir so जदि मते हमें आउट एग्जांपल नै जवा and then we will go for the questions are very easy मिक्सचर पूरा मजा आसी जो देखियो रेशियो जे भल से जे रिवाइज कर दे जो जे एक्चुअली ठीक से पढ़ा पढ़ी करी जो रेशियो बहुत इंपोर्टेंट एंड रेशियो सॉरी मिक्सचर बहुत इंपोर्टेंट एंड क्लियर है जो वंस तमे मिक्सचर सॉरी वंस तमे रेशियो और मिक्सचर ठीक ठाक क्लियर हेलो परसेंटेज रे चुटकी रे उड़ी जो परसेंटेज प्रोफाइल दीटा तो देखो मोड एग्जांपल एक्चुअली नो जी मिक्सचर ए एंड मिक्सचर बी को मु कोन करिवे 4:5 रेशियो रे मिसेबी मिक्सचर ए रे भी मिल्क और वाटर ही अछि इन द रेशियो 3:1 मिक्सचर बी रे भी मिल्क और वाटर अछि दैट इज 2:3 रे क्वेश्चन को जी 4:5 रे मिसेले फाइनल मिक्सचर और मिल्क और वाटर ता माने केते हेबो ताले एथरे केते मिल्क हेबो 3/4 कहार 3/4 4 रो 3/4 बिकॉज़ हम रेशियो नेले भी चलियो मु मूल रो पर प्लस ये 2:3 रे अछि ताले मिल्क एटी केते नेबा 5 रो 2/5 divided by this is again 4 रो 1/4 plus 5 रो बाकी 3/5 एटा लिखि देले तो एटा लिखि देबो बाकी गैप जोटा हबो ये कैंसिल आउट हो जाउजी सो विल डायरेक्टली कैंसिल आउट so 3 plus 2 by 1 plus 3 result is 5/4 simple এই কনসেপ্ট को हमें लगे कि फर्स्ट किसी क्वेश्चन सॉल्व करबा देन वी गो फॉर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट करके समस्त जल्दी देखो देन ओनली द कंसंट्रेशन ठीक से बाहरियो नहीं देखो
The ratio of the milk and water in mixtures of 4 containers are 5:3, 2:1, and 3:2, and 7:4 respectively. Each which container, please try to understand, in which container the quantity of milk relative to the water is minimum. Question कौन कहूची माने मिल्क टा वाटर कंपेयर ता माने जे कम अछि किमा इनडायरेक्टली हमें कहि परिबा को क्षीर रे को मिक्सचर रे कि ता माने बेसी रे पानी जा ता माने अछि को मिक्सचर ता ताले मु ताले कोन खाली बाहर कर देले हे जबो मिल्क कंसंट्रेशन ता बाहर कर देबी जोडा छोटो हो से ताले आंसर हो मिनिमम मते दरकार एथिरे मिल्क केते अछि को 5/8 एथिरे केते हो 2/3 एथिरे केते अछि यस 3/5 7/11 तुमको मु सिंपलीफिकेशन पढाइला बेले बतैथिली फ्रैक्शन केमती कंपैरिजन करिवो कोडा छोटो एंड कोडा बडो ना हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिवो यस once again I am repeating जदि मते दीटा फ्रैक्शन को कंपेयर करिवार अछि मु इनती क्रॉस मल्टीप्लाई करी कि न्यूमरेटर रे रिजल्ट लिखिबी 3 पंचा 15 8 2 गुणे 16 ये छोटो हे गला ताले ये स्मॉल फ्रैक्शन ये बडो हे गला दिस विल बी कंपैरेटिवली लार्ज तो सेम टेक्निक को एठी हम एबे अप्लाई करिवा ताले देखो 3 into 5 15 8 into 2 16 मते छोटो फ्रैक्शन दरकार ये बे ताले कैंसिल आउट हे गला मो पाके बे की रहि गला मु लिखि दउजी एग्जाम रे कि लिखिबार दरकार नै ए डीटा को एबे कंपेयर कले 5 into 5 25 8 into 3 24 ये ताले बे कैंसिल वर्तमान जे छोटो 3/5 है 7/11 से चलो कंपेयर करो 11 3 ये ला 33 ये ला 7 पंजा 35 ये ताले छोटो हो गला सो फाइनल सिलेक्शन विल बी 3/5 then I can say where the concentration of milk is minimum this is the third vessel 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy. देखो क्वेश्चन कौन कहि एलॉय मिश्र धातु हम ओडिया रे पढी दिले एटी ताको एलॉय को आजु एलॉय ए रु 60 kg मिसेबी एलॉय बी रु 100 kg मिसेबी एलॉय ए रे कोन कोन अछि लीड आउट टिन एंड एलॉय बी रे कोन अछि टिन आउ कॉपर दीटा को मिसई सारिला परे क्वेश्चन कहबा हिसाब रे फाइनली जो एलॉय टा बाहरी बसेतिरे टिन ताले केते बाहरी ताले मु एबे कोन करबी फर्स्ट रु केते टिन जाईजी एंड सेकंड रु केते टिन जाईजी मिसई देले फाइनल थरे केते टिन बाहरीबो सेटा बाहरी जबो यस ताले निजे एबे को फर्स्ट रु केते टिन जाईजी 60 इनटू केते रेशियो थिला 2/5 2/5 सेकंड रो 100 रु 1/5 एटा 3 एटा कॉपर ताले जस्ट यू सॉल्व विल गेट 12 2 गुणे 24 आउ 20 माय आंसर इज सिंपली 44 kg आंसर तो ସେଥିରେ ବି लीड ଆଉ କପର ର ପଚାରଥାନ୍ତା ना फाइनल तेरे जदी मते लीड आउ कॉपर इजिली पचारिबो खाली लीड तो पचाले फर्स्ट रु जहा जितो से आही है 60 रो 3 बाय केते होरे 5 माने से 36 केजी का लीड कॉपर पचाले सेकंड रु जहा जितो से आही थिबो माने 100 रु 4/5 80 केजी बुझे लागी नहीं आगे बिकॉज़ फाइनल रे जो बाहर जी बाहर दुटा मिसिंग नेक्स्ट एटा रे इंपोर्टेंट एक्चुअली आको हम बढ़ीबा हम लेवल धीरे धीरे एक्चुअली बढ़ेबा एंड दैट इज एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग एक्चुअली हमें कोन करे लेवल धीरे धीरे बढ़ेबा जिंदे हमको को जारे फील हवा कथा नहीं कि कोन ता माने बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे होला बट समस्त को एती मोर रिक्वेस्ट है जो दिन रो क्लास से दिन की प्लीज ट्राई करो रिवाइज कर देबा पे A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11.
ए आउ बी दुईटा एलॉय एक्चुअली अछि मु पूरा फॉर्मेट लिखु छी एग्जाम रे केते स्टेप हटेबा दैट इज लेटर A and B are two alloys of gold and copper. Gold ଆଉ copper ଦୁଇ ଥିରେ ଅଛି गोटे ଥିରେ 7:2 and गोटे ଥିରେ 7:11. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, ए दीटा जाको मिसे देकी मुरे थर्ड alloy C बाहर करिवि ताले से थर्ड थरे गोल्ड कॉपर ताले केते हेबो ताले को रेशियो रे माने मिसा जिवो मु कोन करिवार अछि फाइनाली जो गोल्ड कॉपर बाहरिबो तार रेशियो बाहर करिया पे मते को रेशियो दरकार को रेशियो रे मिक्सचर मिसी जे मु सेया कहले हे जिवो A to B ର रेशियो अच्छा ताले इक्वल क्वांटिटी माने को रेशियो रे ताले हम मिसेबा 1:1 1 sir हम ये आंसर कैन नॉट बी सेते बेले हेबो जेते बेले हम रेशियो किबा क्वांटिटी किछि भी जानि नथिबे बट जेहेतु हमको खाली रेशियो भी दे देछि इक्वल क्वांटिटी लिखि देला दैट मींस वी नो द रेशियो तमे दुई थिरु गोटे गोटे केजी नै पारो गो दुई थिरु दुई दुई केजी तम मन इच्छा तमे नेबो जहा नेले चली ताले मु एबे कोन करबी सी रे ताले गोल्ड बाय कॉपर एबे ताले हम बाहर करबा 1 केजी रो केते भाग गोल्ड 7/9 सेकेंड रो गोटे केजी नेले एथिरु गोल्ड केते हेबो 7/18 होल डिवाइडेड बाय 1 रो एथिरे गोल्ड केते हेबो रे सॉरी कॉपर केते हेबो 2/9 11/18 सॉल्व बोले ऊपर तल डिनोमिनेटर मु 18 कर दोजी एलसीएम 18 18 ही हेबो ताले ऊपर 18 जदी कटि जीवो ताले केते हेबो ये 14 + 7 खाली रही जीवो ये केते रे जली 4 + 11 सो दिस इज 21/15 ही जदी हम कैंसिल जदी करबा 7 by so I think everybody got the answer clear समस्तंगर सर एटा जो 1/1 मेथड रे होबा कोडा जो 1 गुणा हला त माने बुझ पइले ना ना दुई थरु समान क्वांटिटी ना माने हमें फर्स्ट थरु गोटे केजी नै गले सेकंड थरु गोटे केजी तो फर्स्ट थरु 2 केजी सेकंड थरु 2 केजी नेले भी चलियो फर्स्ट रु 4 सेकंड रु 4 बिकॉज़ हमें कोन जानिले 3 लीटर क्षीर रे 1 लीटर पानी मिसे भी जहा 6 लीटर रे 2 लीटर मिसे भी से दैट मींस हमें मिक्सचर हमें ताने रेशियो ही नेबा तो एठी दुही थरु जे हमें समान क्वांटिटी मिसो जे तमे दुही थरु केजी केजी मिसेले जहा दुही थरु 2 2 केजी 4 4 केजी मिसेले भी से बिकॉज़ 4 4 नेले भी कहबो फाइनली तो कोटी एका जीवो इक्वल क्वांटिटी दे जे हां सेति पे अलगा आइतिल अलगा नेबा हमें अछि आकु क्वेश्चन हम करू जा आकु आरे नेक्स्ट नंबर two equal vessels are again the same concept and you will see no previous year actually बहुत question actually equal vessels आसे two equal vessels are filled with the mixture of water and milk in the ratio 3:4 and 5:3 respectively if the mixtures are poured into a third vessel the ratio of water and milk in the third vessel केते simple जिंस गोटे थरे milk water 3:4 रे अछि water to milk आउ गोटे थरे वाटर इज टू मिल्क को रेशियो रे जी 5:3 दीटा को भी हम मिसई देबा ताले फाइनली जो गोटे मिक्सचर बाहरिबो सेथरे वाटर टू मिल्क हमने केते हेबो को क्वांटिटी रे मिसी जे ना इक्वल क्वांटिटी माने अगेन से 1:1 रे मते मिसेबा को पड़ियो देन व्हाट विल कहार रेशियो एटा सबले फोकस करि देबो वाटर एंड मिल्क यदि मिल्क एंड वाटर मागिबा हम रिवर्स करिके लिखिबा ऑप्शन को हम सही हिसाब रे चूज करिबा because ratio proportion तुम से ही ऑप्शन माने पाइबो जदी 3:2 अछि ताले 2:3 आ गुटे ऑप्शन दिबो ताले वाटर एठी केते हेबो एबे देखो इक्वल क्वांटिटी फर्स्ट जारु केते जेबो दुश्मन तो 3/7 3/7 सेकंड रु केते जेबो 5/80 5/8 डिवाइडेड बाय एबे हमें मिल्क को एबे नेबा मिल्क एबे केते जेबो प्रज्ञा So 4/7 yes very good 4/7 and second ru kete hebo 3/8 एबे देखो दुही थिर डिनोमिनेटर एक्चुअली 56 56 ही आसीबो ताले सेटा हमको दरकार नै तो ये जे कि एठी मल्टीप्लाई हो 24 ये केते बताउ ने 35
So I am writing 24/35. एठी केते हबो 32 plus 21. Now you solve, you will get 59 divided by 50. So this is my right answer. Simple. एबे देखो two alloys A and B, the ratio of zinc to tin is 5:2 and 3:4. गोटे थिरे अछि 5:2 रे आउ गोटे थिरे 3:4 रे. क्वेश्चन कहि जे 7 kg of alloy A एथिरु 7 kg is mixed with 21 kg of alloy B. Either you can take 7 and 21 रो ratio 1:3 नले डायरेक्ट तमे 7 और 21 भी तमे नहीं पारिबो. तो क्वेश्चन कौन कह रेशियो ऑफ जिंक टू टिन इन द न्यू एलॉय. सो आई कैन राइट डाउन जिंक टू टिन केते हबो देखो फास्ट रो केते जीवो 7 रो 5/7 प्लस 7 रो सॉरी 21 रो केते जीवोटा 3/7 3 केते हबो 7 रो 2/7 21 रो 4/7 7 7 cancel ये 7 3 कटी जो 7 7 cancel 7 3 cancel. So this is 5 plus 9 by 2 plus 12. This is equal to 14/14. Ratio is 1:1. बुझिए गला समस्तंकर. आज्ञा नेक्स्ट आंसर संगीता अच्छो कि नहीं. हाँ सर. चलो आंसर समझते बाहर करो. संगीता तुम्हें को फास्ट न हले पुणी का चांस दो. Just you find and tell the answer. Sir, 2:1. 2:1. Yes, right one. देखो. In an alloy, the ratio of copper and zinc is 5:2. If 1.250 kg of zinc is mixed with कहाँ संगे मिसिबो इटा बुझो 17.5 kg of alloy. तामाने मु 17.5 kg alloy नेबी जो थिरे कि कॉपर आउ जिंक रो रेशियो केते अछि 5:2 अछि. एवं एथरे आनी कि मु एबे मिक्स कर देबी जे कोन एक्चुअली एथरे आनी कि तमे ओटे मिक्स करियो से कहि जी 1.250 kg of zinc मिसेवार अछि. दैट्स वेरी सिंपल. तो ए जो 17.5 को मु फर्स्ट कोन करिवार अछि 5:2 रे एक्चुअली मु एबे ब्रेक करिबे. ब्रेक कले कॉपर केते हे जबो रे 17.5 रो 5/7 and zinc केते हेबो 17.5 रो 2/7. So this is nothing but एटा 25% 175. So this will be cancel out at 2.5. 25 50 125. So ये 12.5 and ये केते बोले 5 हे जबो. तो एबे क्वेश्चन कोन कहि छी ना एथे माने 1.25 ताले मु एबे जिंक मिसै देबे. तो जार रे ऑलरेडी कॉपर अछि 12.5 और 5 ता माने जिंक अछि. जिंक जदी आनी कि मु 1.25 मिसै देबे ताले केते हे जो जिंक एबे ताले 6.25. So after mixing the 1.25 kg of zinc with 17.5 kg of the alloy, the final amount of the copper in the mixture is 12.5 kg, whereas the final amount of zinc in the mixture is 6.25. If the questions asks me to find out the ratio, then I can say this is 12.5 by 6.25. ये तारा double 6 दुगुने 12 0.25 रो double 50, that is 0.5. So answer is simple 2:1.
दैट्स गुड जाको असुविधा होची 125 बाय 6250 सॉरी 125 का 1250 बाय 625 यू कैन डू दैट आकु टिके बढ़िबा हबे कोन को जरिंग कि ना कोडा एडा हाँ को जगह रे को केते दूर बुझिलो 17.5 ଯେତେବେଳେ କପର ଗୁଣ ହେଲା ତାପରେ ଜିଙ୍କ ରେ ଗୁଣ ହେଲା ସେଇଠି ବୁଝି ପାରିଲିନି अच्छा 17.5 केजी रे कॉपर जिंक को रेशियो रे 5:2 रे ना ଆଜ୍ଞା तो कॉपर टा केते पार्ट हबो 5/7 ପଟା 5 ପାର୍ଟ ଅଛି हां आ जिंक टा केते अछि 2 पार्ट सो 5/7 2/7 तो एना हिसाब कोले 7 रे कटिले 2.5 25 ता 175 25 50 125 तो 12.5 हे गला एंड सेटा 25 दुने 50 तो 5.0 माने 5 हे गला तो एथरे बे आने की तो मिसई देबो केते केजी रो जिंक 1.25 केजी तो फाइनल मिक्सचर रे जिंक ता माने केते हे जो 5 + 1.25 माने 6.2 ओके यस नेक्स्ट नंबर 7 को एबे जीवा mixture A contains 20 liters of milk and water whereas mixture B contains 50 liters of milk and water in the ratio 1:3 and 5:2 respectively. Both the mixtures are mixed together and then again 8 liters of water is added to it. Then what will be the ratio of milk to water in the final mixture? Simple lekhalti ame bahar kariya. Finally milk और water mu bahar karibi. को गोटो आसीबो मिल्क फर्स्ट थ्रू भी आसीबो सेकंड रू भी आसीबो अच्छा फर्स्ट रे केते लीटर मिल्क आसीबो 20 रो 1/4 सेकंड रू केते मिल्क आसीबो 50 रो 5/7 एति की हबो वाटर केते आसीबो फर्स्ट रू 20 रो 3/4 आसीबो एंड 50 रो 2/7 आसीबो आउ केते लिखिबी प्लस मु 8 करी क्वेश्चन कोन कहितला फर्स्ट रू 20 लीटर आनी की मिसेबो सेकंड रू 50 लीटर आनी की मिसेबो मिसे सला पर 8 लीटर पुणी आनी की पानी डाले मिसे देबो तो मिल्क तो जहा आसिला फर्स्ट रू सेकंड रू सेतकी हेगा वाटर ताले केते आसीबो फर्स्ट रू आसीबो सेकंड रू आसीबो प्लस गोटे 8 लीटर डाले की एक्स्ट्रा हबो so now we have to solve please try to understand I am eliminating the denominator again just गोटे इंसान को फोकस करिया को पड़िबो ए डिनोमिनेटर दिले 28 हेबो काटिबा जदी हमें 8 रे ताकू ताले मल्टीप्लाई करी काटिया को पड़िबो सो ऊपर ताले केते हेबो 0 into please try to understand this is 140 ये केते हेबो रे 1000 हेबो कि नहीं 7 जगी कोथरे इनटू हेबो 20 रे 4 जगी कोट इनटू हेबो 50 और 5 रे डिवाइडेड बाय मो डिनोमिनेटर उडे दिली पूरा 28 तळे भी सेमती उडेबा 20 30 60 रे 7 इनटू हेबो 420 प्लस ए 4 जगी इनटू हेबो 50 दुगुणे 100 रे 400 प्लस ए डिनोमिनेटर 28 एतना 8 रे की इनटू हे जेबो तो 30 * 240 - 16 this is 224 that's it multiplication is so fast जदी मैं प्रैक्टिस करियो मु तुम कहितली 28 8 मु भी जानि 224 but I can find 224 पणकी हमें जानि नो किंतु हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक एक्चुअली लगे पाले तो जे कोन सी ट्रिक तमे लगे पारो मु कहले 28 सॉरी 28 into 8 जो बोली 30 अष्टा कर देली एंड माइनस 2 टे काटी देली सो एबे देखो ताले केते हेबो एटा केते हे जो देखो एटा 1140 ये मिसे दे 400 200 600 400 एटा 1000 1044 4 कटी जीवो 285 260 that is answer
सर गोटे डाउट को ए जो 80 टा ऐड हैला सेटा माने पछरे ऐड करथिल कोन हिन दंता माने सब बाहर कर सेले पर जेंति बाहर करथिले तापर 80 टा ऐड करथांते केमती कहू को मन कर मु बाहर कर देनी ओके ओके तां कथा क्लियर करिया तमे कहि सारे फास्ट मु 5/7 बाहर कर देथानी पर 8 मिसै थांदी तो आगे सर मु तो बतली 5/, जो माने जेंति हमें बाहर करे हां तो सेंति शेयर बाहर करिए करथांते आगे यस आई एम आगे टेलिंग सपोज 5:7 बाहरी थाना बिना 8 रे को आगे बुझो तापर आनी के एठी ता माने हमें +8 कर दी थांदे तो आगे मु से तळे नहीं भूले जाओ कौन भाई दिस इज 8 लीटर्स नो 8 लीटर्स 8 लीटर्स सर टिके 6 नंबर को जिबे ओके जदी तमे केदी चाहू जदी सर मु लास्ट ऐड करबी ताले तमे सेरा रेशियो नेबा को पड़िबो रेशियो नै परिबो 20 50 एटा मिक्सचर मिल को तमे 0.8 नले कर दो वर्क विल बी ओवर बट सिंपली करनी कोन भाई कहलो बिकॉज़ लास्ट मते कोन करा जे एरा 8 लीटर वाटर अछि गोटे सिंपल जिंस तो कहू देखो एबे बुझी जीवारो गोटे देखो देखो ये गोटे सिंपल जिंस बुझियो गोटे जार रे फाइनल मिल्क 30 लीटर हला वाटर 32 लीटर हला मुई थरे 8 लीटर जेतले पानी मिसै देबी तो 8 मिसै 40 लीटर हो तापर 3:4 हो बाकी जदी मु आगरु जदी बाहर कर दोजी 15:16 हिबो एथरे 8 मिसै तो 15:24 सो एटा तो भूल कोले जानी जानी परिबानी ना नहीं कि तो 8 रेशियो रे लीटर मिस अछि तो कर रेशियो रे मिसै कर हां भूल ले जो यस सर टिके 6 सस्मिता नंबर तमर 6 नंबर कोन हला सर एटा को हमें डायरेक्ट यूनिट रे लिखि परिबानी जेमती 17.5 हैला 7 यूनिट हैला 1 यूनिट हिजबो 2.5 आ एटा 1.2 हैला पारिबो करी यस यस करी हबो कई हम हे जबो 5 यूनिट को 12.5 हेले एला केते की एटा 1.25 टा 0. तार आधा हे जबो 1.25 करी हबो जे रेशियो बाहर कराई तमे बैक करी पारिबो नाउ आंसर एटा पचारिबी कागो पचारिबा एटा साजन यस सर लागी पड़ो समस्ते बाहर कर रहिली जाको जार ना धरिबे आंसर से फास्ट कहबो एबे तीनटा को क्वेश्चन मु करबी नीली जणे जणे ही करबो एटा क्लियर हे गले हमको नेक्स्ट क्लास माने वीडियो होबनी केते हला छमड़ी देखे रे क्या स्नेह लक्ष्मी अजो के नहीं केते बारी जी तमरो स्नेह लक्ष्मी सर 61/29 61/29 कारो एतकी बारी जी अलगा कारो बारी जी हाँ ठीक है अच्छा ठीक है तो 61/29 है सीतम तुम रही जी के नहीं सर मु लेट जॉइन करे ओके 11:40 ओके देखिबा केते बारी 61/29 नहीं के there are 3 containers of equal capacity eta important equal capacity माने 1:1:1 रे मिसेबा फर्स्ट जार रे सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर अछि 3:2 रे
सेकंड जार रे अछि 7:3 रे, थर्ड जार रे अछि 11:4 रे. If all the liquids are mixed together, then the ratio of sulfuric acid to water in the mixture will be kete 1:1:1 नेबा. So 1 into 3/5 लिखी थांदी तो मु खाली 3/5 एका जिंस 7/10 11/15 divided by एथिरे केते हो बाकी 2/5 3/10 plus 4/15 एलसीएम केते हे जबरे 30 हे जब तो काटी दे जो मु डायरेक्ट 30. सो ये ताले 5 छको ले 3 छको 18 ये 21 ये 22 ये केते हुआ ये 12 ये 9 ये 8 22 और 3 तो 40 को 60 61 9 और 17 यस एक्सेलेंट आंसर इज देयर. नेक्स्ट एटा बुझियला समस्त एटा जे बुझियो नेक्स्ट टा बुझिया पे इजी हे जाबो. ओके देखो नंबर 8 और नंबर 9 भितर गोटे बेसिक माने बहुत छोटो डिफरेंस अछि. एटी ता माने इक्वल कैपेसिटी रो वेसल देथिला एटी बाकी अलग अलग कैपेसिटी रो से लिखि जे कोन 3 vessels whose capacities are in the ratio 1:2:3 अलग अलग जार अछि. गोटे जार रो लीटर टे थिले गोटे जार रे 2 लीटर अछि गोटे जार रे 3 लीटर अछि अलग अलग कैपेसिटी अछि are full of mixture of milk and water. They contain milk and water in the ratio 1:2, 2:3 and 3:4. तो आगरु कोन दोथला ना सब सेम कैपेसिटी एबे अलग अलग कैपेसिटी माने फर्स्ट जार रो जदी मु गोटे लीटर नेली सेकंड जार मु ताले 2 लीटर थर्ड जार 3 लीटर फर्स्ट रो 10 लीटर नेले सेकंड जार 20 लीटर थर्ड जार 30 लीटर. Then what will be the milk to water in the final ratio kahar diji milk water bahar kariba kahar milk water. So now it's become very simple for us. Just mo lekhi deji agre tale first re milk kete hebo 1/3 second re milk kete hebo 2/5 third re milk kete hebo 3/7 first re water kete hebo remaining 2/3 एथिरे केते हे जेबो remaining 3/5 एथिरे केते हो remaining 4/7. एबे एक्चुअली हम पे एक्चुअली चैलेंजिंग जे कैलकुलेशन हम एक्चुअली कोन एक्चुअली सॉर्ट करि पारु जे दैट सिंपल डिनोमिनेटर ऊपर मु किछि भी काम करूनी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 5 7 2 डिनोमिनेटर आसीबो दैट विल बी कैंसल आउट हले ए 1 रे के ताले मल्टीप्लाई हो आसीगी ए दीटा रो डिनोमिनेटर. सो 7 5 35 के 35 ए 2 2 गुणे 4 रे आसीगी 3 और 7 मल्टीप्लाई हेबो 7 3 21 14 ताले 84 ए 3 3 9 रे 5 और 3 15 9 गले कि 135 हो सिंपल. एटी 7 5 35 2 रे की मल्टीप्लाई हेबो 70 हे जेबो ए 7 3 21 जे की 6 रे मल्टीप्लाई हेबो 126 हे जेबो एंड 4 3 12 रे एक्चुअली 15 की मल्टीप्लाई हेबो 180 हे जेबो. तबे केते हेबे देखो. So this is equal to एटा मिसे देबे 180 एटा 35 35 70 170 250 54 254 376 यस एटा 170 एटा 180 120 300 आड़ा 76 376 2 रे काटी दियो 127 and this is equal to एटा हबो 188 वर्क इज ओवर नाउ. आ कोटी मन लागु जे एमदी ऑप्शन न पाइले ऑप्शन देखि हम कैंसिल आउट कर दबो बड़ नंबर कटिले धरिबेनी सहज सो यू कैन डू दैट. तो डिफरेंस केवल एति की थिला एटा इक्वल कैपेसिटी ता माने एठी हम कि लेखि नथिले माने एटी 1 1 1 ता माने थिला बट से जगह रे कोन देजी वेसल मान कर कैपेसिटी का 1:2:3 देई जे सो वी डू दैट से तळटा 6 180 और 120 370 और 676 से हम मिसेले ऊपरटा भी देखा होइली जस्ट मु तुम कोइ न दिले कैलकुलेशन इली बहुत वैरायटी रे तुम करि पारिबो. मु 35 को फास्ट ऐड कर देली 270 हला 80 मिसे देली 350 40 4 तापर 354
170 ହେଇଥିଲା ନା हाँ सॉरी 170 आ 80 250 और 4 204 किछि भी से कैलकुलेशन मु तुम सब बेले कहे a + b + c अछि तुमको देखिबार अछि a को फास्ट c मिसे की परे b रे मिसेबी ना a को b रे मिसे की परे c रे मिसेबी कॉन्सेप्ट सेम हमें एतकी दूर जे कॉन्सेप्ट क्लियर हे गलेनी चाहे सेटा इक्वल कैपेसिटी हो चाहे अलग कैपेसिटी दो जदि हमें मिक्सचर मान को रेशियो जानी जे एंड सेथिरे जो इंग्रेडिएंट्स अछि यदि तार रेशियो हमें जानी देले देन हमें ताले फाइनल रेशियो बाहर करि परिबा if we don't know the exact value of the final mixture but we can find out the ratio in the final mixture ए concept को लगे कि हमें नंबर 10 को इजिली मूव करिबा and which may be looking like a larger number but the concept is very small कौन लिखी जी 3 vessels whose capacities are 3:2:1 are completely filled with milk mixed with water mute कर देगा रोट 1 मिनट 3:2:1 रे मिल्क और वाटर भर्ती है कि तीनटा जार रे अछि गोटे जार रो कैपेसिटी 3 लीटर आ गोटे जार रो कैपेसिटी 2 लीटर आ गोटे जार रो कैपेसिटी 1 लीटर the ratio of the milk and water in the mixture of vessels are 5:2 4:1 and 4:1 respectively फर्स्ट जार रे तमने मिल्क अछि 5:2 रेशियो सेकंड जार रे अछि 4:1 रे थर्ड जार रे भी 4:1 बाकी हमें एटा मिसोनु टोटल तीनटा जाक जार में मिसोनु कहा को मिसो जे taking 1/3 of the first jar half of the second and 1/7 of the third mixture a new mixture kept in a new vessel is prepared the percentage of water in the new mixture is kete this is a previous year question I think the answer is 24% मत जा लागू जे एनी हाउ देखिबा देखो मु तो बते दे सिंपल किन सहिजली बिकॉज़ स्टेप हम उठेबा जदि एठी मते परसेंटेज ऑफ वाटर न मागे कि जदि मिल्क और वाटर रेशियो मागी थांदा ताले मु डायरेक्ट या करि थांदे मिल्क बाय वाटर करि थांदे सिंपल जिंस मते मन कर मिल्क बाय वाटर लास्ट 3/2 बाहरी थांदा ताले व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क 3/5 into 100 कर दवा 60% गोटे जार मिल्क 3 भाग वाटर 2 भाग अछि माने टोटल केते ताले मिल्क अछि 3/5 5 रु 3 परसेंटेज सारे दाम 60% नै थांता ताले ए 5 टा कोन ताले हम मिक्सचर ही तो देखु जे गोटे जार रे 10 लीटर मिक्सचर थाई कि 3 लीटर वाटर अछि ताले वाटर परसेंटेज केते हेबो रे 3/10 into 100 माने 30% सो मु कहबार माने एठेला जेतु मते परसेंटेज मागे जी ताले मु मिल्क आ वाटर न बाहर करे कि डायरेक्ट एक्चुअली मु वाटर और मिक्सचर तामने बाहर कर देबी सो हमें से ही एक्चुअली करबा मु ऊपर लिखबी जस्ट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट इट मे बी इजी फॉर अस टू क्लैरिफाई 24 मोर जहां आंसर मने पड़ी से आएगा यस सर 24 हो मिल्क बाय मिक्सचर माने टोटल मिक्सचर केते भाग तामने मिल्क अछि एबे मते तमे निजे को देखो मु एथरो कोन 3 लीटर मिसेबी 3 रो 1/3 देछि ना सूर्य प्रकाश मिसे हेबो कि 3 लीटर ना केते नेबी तामने 1/3 नेबी 3 रो सो मिल्क ताले फास्ट रु केते जीवो फास्ट मिक्सचर रु 3 रो 1/3 मिक्सचर नेबी भाई सेथिरे पुनी मिल्क वाटर रेशियो केते जी 5:2 माने 5/7 जीवो सो दैट इज माय आंसर 2/7 से मिल्क बाहर क्वेश्चन मिल्क में बाहर करबा अरे ओ सॉरी वाटर मागी जीवो दे ना हां सॉरी why will go yes 2/7 yes just a minute change कर दो आडो हटाओ कथा प्लस सेकेंड वाटर न एतरे 2 लीटर थिला बाकी मु तार आधा नेबी माने 2 into 1/2 2 रो आधा नेली एतरे वाटर केते हेबो देखो 1/5 लास्ट केते लीटर अछि गोटे लीटर तारो केते नेबी 1/7 तारो भी केते 1/5 दरकार माने 1 रो 1/7 रो 1 बाय जेते भी मिक्सचर हमें मिसु जे केते मिक्सचर मिसेले 3 रो 1/3
yes 2 रो हाफ एंड 1 रो 1/7 एतिकी दरकार एरा पाई गला परे गोटे 100 जदी मु इनटू कर देली मोर परसेंटेज एबे ताले बाहरी जीवो एटी कटि जाउ जे मु सेति काटि दउ जे 3 3 कैंसिल हे जीवो 2 2 कैंसिल हे जीवो सो व्हाट यू विल गेट 2/7 1/5 1/35 this is 1 plus 1 1/7 देखो कौन करू जी बहुत सिंपल समझ देखो ता देखो या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तुम 35 35 कर दियो दैट विल आल्सो बी इजी आ जदी न भी जदी करू जो उल्टे की सीधा लिखिबा एटा को लिखिले केते हेबर एटा 5 5 इनटू करो फर्स्ट रे 5 सेकंड रे 7 12 लास्ट रे 1 ही कहबो केते ही जेबो जे तमने 13/35 हेबो तो 35 ने गले केते हेबरे 7 पंजा हले ऊपर 2 पंजा 10 सॉरी सॉरी 18 18/35 इनटू ये केते हो ये 15/7 उल्टी गिरी केते जो ताने 7/15 इनटू 100 मुझे यही दरकार थिला सो ये 7 पंचा इजिली कैंसिल हे गला एंड दिस इज इक्वल टू ये देखो बेटा 18 ही केटा अछि एटा 6 3 5 3 5 पंजा 25 चौ एंड 4 चौ 24 कैलकुलेशन तमे करिवो जाको जेमि सुविधा हो जदि मते रेशियो मागी थांदा वाटर इज टू मिल्क ताले मु तोले मिक्सचर न करी थांदी एंड मु कहूनी जे मिल्क रेशियो बाहर कर देले आंसर बाहरिबोनी रेशियो बाहर करले भी आंसर बाहरिबो बट आई थिंक व्हाई विल डू 2 to 3 स्टेप्स मोर तो आगु हमें क्वेश्चन रे जदि तामने हमें ठीक से बुझी जवा क्वेश्चन को तो मु जानि सालली जे मते इजिली भाई फाइनली तो परसेंटेज ही दरकार तो मु आई विल वर्क ऑन दैट से जो टिके आ थरे जो कैलकुलेशन टा करिए कैलकुलेशन देखो जिले हमें कोन करी जे एठी एटा 2/7 plus 1/5 plus 1/35 थला एलसीएम जदी 35 नै जवा एतरे 5 इनटू करबो ना 5 7 माने 7 एटा 1 18/35 और तळडा 2 plus 1/7 माने ये 15/7 अगे डिवाइड कितला तो इनटू करी उल्टे देले खाली हो ठीक है सर ओके आ गोटे दिटा करबा देखो अलगा कांसेप्ट टी अछि नेक्स्ट स्लाइड नले करिया हम नेक्स्ट स्लाइड करिया नले व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एड नेक्स्ट स्लाइड करिया एटा और रिप्लेसमेंट एका संग सारियो वीडियो समझते जे कि देखो टिके देखो जिले हम बेसिक क्वेश्चन आज गले धीरे धीरे तो थाबी लास्ट क्वेश्चन मान हेतलानी बट टाइप एक्चुअली सेम टाइप रहला तो एबडा क्वेश्चन एक्चुअली आसुची क्वेश्चन बडो हले भी कांसेप्ट एक्चुअली सेम ही हेगा एंड टुमारो द क्लास विल बी एट द 10:30 am काली 10:30 रे और आज मोर मन नथिला नले आ गोटे कांसेप्ट पढी दिसंदे सिनु भाई तमरा बुझी हो जे कि नहीं